Hello friends, welcome to Analytic Fusion. So in today's video, we will talk about one very important concept which is currently hot in AI space, that is explainable AI. देखिए explainable AI होता क्या है? आपने मॉडल तो बना दिया. Your model is pretty good, recall, precision, RMSE, everything is working fine. However, now you need to explain why your model is giving this prediction to a certain row or a user. Okay. So what happened exactly with me as well? Oh, I also recently made one churn prediction model. I was able to explain it to the marketing team. What is basically recall precision? How should we look for recall in the current metric or precision, whatever will suit our case. But the thing is, they came up with another request. They said, Shubham, fine, you build a model. We are going to use it. However, just give me an explanation why the model is predicting this user as a churn or this user as not churn. Now, see guys, what happens? It's relatively simpler with models like logistic and linear, wherein we get the beta coefficients which help us explain how they are related to a target variable. But in case of a random forest, XGBoost, gradient boost, or the descent tree, we only get the feature importance. We don't get an explanation like which factor is driving the results towards churn or which factors are driving results to the not churn. Now, this is a very peculiar problem. Now, what I did, I study on the net and then I found out there are certain ways through which you can explain how your model is working in a certain way. So in this video, we will go deeper into all the techniques which are available right outside, which can help us explain this kind of a models to a non-tech person. Okay. So what I did, as you can see on my screen that I have basically loaded a diabetes data. This data comes from the basically from okay. So we downloaded one diabetes data from the Kaggle, and then we build a random forest using 100 trees and bootstrapping. Okay, we have the rf.fit and these are the basically metrics on the diabetes data. So over here, first we will try to understand. Let's run this cell. So I am using the Colab for the demo. You can use any platform you want. Okay. So this is number one is the basically feature importance. So models like Dysentery, Random Forest, XGBoost, they have a basically built-in function that is feature important that itself gives you what is the importance of a given feature. So let's run this cell and see the results for our cell. You can use this code. Okay. So these are the random forest feature importance. So basically the values over here are the Gini importance. For those who don't know Gini, it's basically a metric which helps you decide if you split the feature by this and this value, what is the Gini gain, which is called Gini importance over here. So according to this model, glucose has the highest Gini importance, followed by BMI age. Now how will you read this graph? So basically it says glucose feature is the most critical feature in deciding whether a user has a diabetes or not, as built by this model. Okay. Now the problem with this kind of a feature importance is, though it tells you which is the most important feature for the model, basically model ने किसको सबसे ज़्यादा importance दी है, however it is nowhere it is explaining was glucose causing diabetes or not, was BMI causing diabetes or not, was age causing diabetes or not. Nowhere you can explain that because of the age my diabetes is increasing or decreasing. You know from the common sense that though lesser the age, more likely you will have the diabetes, but model is not explaining this kind of. So this is the problem with the random forest feature selection. Remember, random forest feature importance only gives you a variable which helps them decide if a user has a diabetes or not diabetes. It's a correlation, not a causation. Okay. Now comes the second part, which is basically partial dependency plot, or you can call it PDP. So this partial dependency plot is basically a part of sklearn library only. So how does they help? यहाँ पे using the partial dependency plot,
from one variable we can extract how this is impacting your model. Okay, understand guys, this works independently. This doesn't take into the consideration of interaction amongst other variables. It assumes the impact of this variable is not affected by the other variables. So basically ये आपने प्रेगनेंसीज करके एक वेरिएबल लिया, इसको प्लॉट किया रैंडम फॉरेस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी प्लॉट, अब उसका एक प्लॉट आ गया. So over here we have partial dependency over here, and on the x-axis we have different values for the pregnancies. So this vertical bar shows you the values which we have in data, whereas for this values we have minuscule values and these are extrapolated sometimes also. तो ये क्या कहता है, एज यू मूव इन टू दी प्रेगनेंसीज, तो आपकी प्रेगनेंसी 0 अगर किसी की प्रेगनेंसीज की वैल्यू है तो योर एवरेज प्रोडक्शन विल बी समवॉट लाइक 0.34. whereas if you have a pregnancy's value of 2.5, your average prediction will go to 0.2325. but इसके बाद if you will keep on increasing your pregnancy's value, most likely your average prediction will go up. अब इसको समझने के लिए एक सिंपल वे देखते हैं. इसमें क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, आपके डेटा सेट पे जितनी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसीज के अंदर 10 यूनिक वैल्यूज है, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू इट विल फाइंड दी प्रिडिक्शन, फिर उसको हर रो पे एवरेज करेगा, दैट विल बी योर पीडीपी वैल्यू. सो समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से. इम्पोर्ट नंपी इम्पोर्ट करते हैं. सो वैल्यूज़ को देखते हैं. सो दिस आर द यूनिक वैल्यूज फॉर द गिवन फीचर. देखिए कैटेगरी वेरिएबल के लिए काम करता है, सिमिलरली ये कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए भी काम करता है. तो यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज देख लें. तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4 डिफरेंट वैल्यूज है जहाँ पे प्रेगनेंसीज की वैल्यू है. इसके बाद हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो एक्स्ट्रापोलेटेड प्लेन लाइन रहेगी. तो एक काम करते हैं, एक हमने एक एम्प्टी एरे बना लिया, ठीक है, इंडिविजुअल करके. अब इसको क्या करते हैं, जो हर वैल्यू के लिए हम इसको एक्सट्रेन में उस वेरिएबल की जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं. ओके, सो इफ यू कैन सी द कोड, एक्स कॉपी इज इक्वल टू एक्सट्रेन डॉट कॉपी. बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम, एक्सट्रेन का कॉपी है, in which we are replacing the pregnancy's value with the unique value. So first value is the 0 value which we are replacing and doing a rf dot predict. ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं इंडिविजुअल नाम के एरे में. ठीक है, वी कैन सी के इंडिविजुअल क्या है, तो आप उसको टाइप करके यू कैन चेक इट, इंडिविजुअल ऑल्सो. इट्स अ नंपी एरे. ओके, तो अगर हम इसका, अगर आप जैसे आप देखते हैं, इसका शेप देख लेते हैं किस तरह का ये बना है. ठीक है, देखिए शेप इज 537, तो बेसिकली द थिंग इज वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 16 वैल्यूज ओवर हियर. तो हर एक रो के लिए इसने एक वैल्यू बनाई है. तो रीड इट, फॉर फर्स्ट वैल्यू, फॉर 0 दिस विल बी द वैल्यू, फॉर 1 दिस विल बी द वैल्यू. सो इसको मीन लेते हैं, एक्सिस 0 बेसिकली देखने के लिए. तो हम देखते हैं, तो देखिए वैल्यू आती है 0.34, 0.3345, 0.3. तो अगर हम यहाँ प्लॉट करके देखेंगे तो देखिए 0 पे 0.43, 1 पे देख रहे हैं 0.334. सिमिलरली अगर उसके नीचे जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, इसके बाद इट इज कीप ऑन कंटिन्यू. सो दैट्स हाउ पीडीपी इज वर्किंग. बेसिकली फॉर अ गिवन फीचर व्हाट इज द एवरेज प्रेडिक्शन लुक लाइक. तो प्रेगनेंसी पे 0 पे ये प्रेडिक्शन होगा. इफ यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग योर प्रेडिक्शन विल चेंज दिस मच. दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन टू अ नॉन टेक पर्सन. देखो आप इस वेरिएबल में ये वैल्यू अगर ऐसे ऐसे बढ़ती रह रही है तो आपका चर्न की प्रोबेबिलिटी है, जो भी आपका टारगेट है, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल एक्सिस. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ पीडीपी. सो एक होता है, इसमें मल्टीपल वेज होते हैं. अगर हम एक और इसके अंदर है प्लॉट करने का वे, द काइंड इज इक्वल टू बेसिकली बोथ. इसके अंदर क्या करता है, व्हाट इट डज, ये अंदर इसके अंदर ये है ना, हर आपके लिए फॉर ईच रो इट विल क्रिएट अ पीडीपी प्लॉट एंड देन उसका एक एवरेज निकाल लेता है. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स ओवर हियर, इफ यू विल सी, देखो आफ्टर 6 के बाद तो ऑलमोस्ट श्योरिटी मोटा ऐसा है आपकी प्रिडिक्शन इंक्रीज हो जाएगी टूवर्ड्स द डायबिटिक. तो आपके 6 से ज़्यादा आते ही कहीं पे भी
तो आपके you will have higher chances of a diabetes, which might not be the case with a lower value पे ups and downs चलते रहते हैं, but 6 के बाद तो drastically more for most of the samples आपकी चर्न की prediction improve हो रही है. Thank you guys for watching the video till here. I hope you would have liked our content. You would have learned more about random forest importance as well as PDP. In the next videos, we will talk about the lime as well as Shapley values. If you like our content, please comment, subscribe our YouTube channel. Thank you so much for watching the video again.